Hello friends, welcome back. Today I have created a new channel especially and dedicated to the researchers. If you are a researcher, this is the best place to find out each and every stuff regarding our research, like the paper publication and everything. Now how we will search it? So just open YouTube and click and type the researchers adda and then enter. So you will get here, this is the researchers adda, this is the first link. So subscribe if you are new and explore this channel. Also go to the researchers adda. So here you will get all kind of the video related to the research and all the stuffs you will get here on daily basis, regular 8 AM morning. So 8 AM morning पर आपको सारे वीडियो मिलने वाले related to the research. So subscribe this channel for upcoming videos. So don't miss any upcoming video. Very important video you will find here. Today we will discuss about UGC approved journal and interdisciplinary journal with quick publication journal. Within 20 days you will get the notification about acceptance and rejection. So let's move to the journal. So this is Springer Journal, Quality Index Journal, and that journal title is Spatial Information Research. This is journal title. And now let's discuss about journal introduction. So this section will cover journal introduction, what actually journal is. So you can see here, this is journal introduction. It is interdisciplinary journal dedicated to publishing high quality original research article in this particular journal. So this journal belongs to the interdisciplinary journal. This is the very important thing. So now let's move to the publication time. What are the types of publication? So you can see here, this is publishing model, open access category is available. So here you will get three types of option: green open access category, red open access categories, and hybrid open access categories. So this belongs to the hybrid open access category. So for more detail in about the publication fees and types of publishing models, you just click on this particular section and link. Now about the publication time, within 20 days के अंदर आपका रिसर्च पेपर का इंटीमेशन आपको मिल जाएगा. सो सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन. सो जैसे ही आप अपना रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करें, देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन विद इन 20 डेज. नाउ submission to acceptance, you will get the publication online 131 days, means within 4 months your research paper will get published in this quality index journal. So this is very good. This is how we can publish our research paper in this fast publication Springer journal. Now about the issue, past publication issue. So you can see about this particular issue and volumes. So how many papers have been published in this journal. So this section will cover the about the journal updates time to time. So you can refer like this. And most important thing about this journal published in both category, print version and electronic version. So both ISSN number is also given here. So this is electronic version and this is print version. Now most important thing about indexing and abstracting, what type of the categories this journal is indexed or not. So you can see here, this is UGC care listed journal. So as we always seek a quality index journal and UGC approved journal and quick publication journal. So this is under the UGC care listed journal and also the SCI index journal. So these are the very important thing about this journal. First one UGC care listed journal है, SCI index journal है, quick publication journal है. So these all the criteria we found in this particular journal. So this is how we can publish our research paper in this journal. Now if you want to what types of the topics covered by this journal, so just click on aim and scope. So it will be redirected to the, after click on aim and scope, we will redirect to this page. So here you will get the topics, वो कौन कौन से ऐसे रिसर्च एरियाज हैं, टॉपिक्स हैं जिसमें हम अपना रिसर्च पेपर मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश कर सकते हैं. सो दिस सेक्शन विल कवर ऑल द topics aim and scope. So here this section is very important, so read out it carefully. So for example, you can see here what types of the topics, means research paper, communication, short communication, review paper, survey paper, case study. In this journal we can also publish. And what types of the topics, so here you can see these are the topics mentioned, all the things like
First one is the special information law, cadastre, real property, market survey, marketing strategy, urban planning, and also the digital image processing and geospatial software, cadastre, smart city, global positioning, GPS. So these are kind of the discipline and subject will be covered by this journal. So here you can see all the research areas and topic. So this section is very important to all of you, so read out it carefully, because this section will cover all overview about this particular types of the article that we want to publish with this particular journal. So the different types of article published in this, so here all the guidelines are mentioned कि हमारा अगर रिसर्च पेपर अगर आप पब्लिश कर रहे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश कर रहे हैं, तो उसका जो वर्ड की लेंथ रहेगी वो 5000 वर्ड्स होना चाहिए। रिव्यू पेपर अगर आप इसमें कर रहे हैं तो उसकी कितनी लेंथ होना चाहिए। स्पेशल केस रिपोर्ट्स अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट कम्युनिकेशन या कोई शॉर्ट आइडिया या, तो वो उसका कितना किस टाइप का कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। ऑल द थिंग्स, ऑल द इंफॉर्मेशन विल हैव हियर. So another editorial board agrees rapid communication. So this is really very good publishing type, so you can publish your research paper in this quick publication journal. So how we will submit our research paper for this journal? So before submission we have to follow all the submission guidelines. So here you will get for author section submission guidelines. So whenever you click on this particular tab, so it will be redirected to the submission guidelines. So here you will get all the information related to how we will make our research paper and articles for this particular journal. कैसे हम अपना रिसर्च पेपर बनाएंगे, सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, वर्ड की लेंथ क्या होना चाहिए, इनकी स्टाइल्स क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थॉरली मिल जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट की जो वर्ड की लेंथ होगी वो कितनी होना चाहिए। सो ऑल द थिंग्स information given here. So read out this section very carefully, so accordingly we can publish our research paper in this particular quickly publication journal. So how we will submit? So after creation, after preparation your research paper, you have to create your login ID, password. So click on my account. So अगर आप इस particular journal में अगर आपने अभी तक पहले publish नहीं किया, आपका अकाउंट नहीं है, so you have to create your ऑन अकाउंट. सो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपकी क्रेडेंशियल इसमें डालनी रहेंगी, तो देन उसके बाद आप अपना सबमिशन पेपर का सबमिशन, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन सबमिट अवर रिसर्च पेपर इन दिस क्विकली पब्लिकेशन जर्नल. सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस जर्नल? सो फर्स्ट वन इज यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल, एससीआई इंडेक्स जर्नल एंड आल्सो क्विक पब्लिकेशन जर्नल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट्स अप टू यू कि आप किस टाइप का मोड चूज कर रहे हैं. हाइब्रिड कर रहे हैं तो यू हैव टू पे. गोल्ड ओपन एक्सेस कैटेगरी अगर आप चूज कर रहे हैं तो देन यू हैव टू पे. अगर आप ग्रीन ओपन एक्सेस कैटेगरी को चूज करेंगे देन यू हैव डू नॉट हैव टू रिक्वायर टू पे मनी. सो इट्स अप टू यू, बट आपको ओपन एक्सेस कैटेगरीज की सारी गाइडलाइंस को थॉरोली चेक करनी है. ग्रीन ओपन एक्सेस, हाइब्रिड ओपन एक्सेस एंड आल्सो गोल्ड ओपन एक्सेस, ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें ऑथर्स को फीस के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि स्प्रिंजर जर्नल में कैसे हम अपना रिसर्च पेपर आर्टिकल पब्लिश करेंगे एंड क्विकली पब्लिकेशन जर्नल है स्प्रिंजर में. सो ग्रैब दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिश योर रिसर्च पेपर towards this particular quality index journal. So friends, thank you for watching this video. अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन so you will get the notification on regular basis and also help your friends by sharing this channel and this video. Thank you.